सेशन स्टार्ट करने के जस्ट पहले मुझे दो लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब एक्चुअली आपको तो सबको पता है कि कल जेईई मेन का रिजल्ट था, राइट गाइस? मतलब कल जेईई मेन का रिजल्ट हुआ था और जेईई मेन के रिजल्ट में मास्टर क्लास के कुछ टॉपर्स, मतलब अब सब टॉपर्स को तो नहीं बुला सकता मैं, लेकिन दो टॉपर्स को मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है, ठीक है। एक तो मेरे बाजू में बैठा है पार्थ कृष्णानी, और दूसरा वेदांत सकरे। वेदांत आई थिंक इसके ऊपर है। वेदांत, आर यू देयर? वेदांत, वेदांत आई थिंक यू कैन टॉक। जस्ट हाय हेलो कर एंड ओके। हेलो सर। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है। तो सबको दिख रहा है यहाँ पे कोने में छोटा सा वेदांत? एंड पार्थ, तू भी मेरे साथ खड़ा है पार्थ, ठीक है। पार्थ तो यहाँ पे आ चुका है, तो वो तो मेरे साथ ही है। और वेदांत आई थिंक कहीं तो कोने में दिख रहा है, वेदांत नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वेदांत को मैं बाद में पिन कर दूंगा वीडियो। उसके जस्ट पहले ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन पार्थ। थैंक यू सर। पार्थ का 99.45 परसेंटाइल आया हुआ है अभी जेईई मेन के ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आई गेस पार्थ को एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी पार्थ। एंड वेदांत, वेदांत भी लाइन पे है। वेदांत, वेदांत का 99.94 परसेंटाइल आ चुका है, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट ये दोनों स्टूडेंट्स जो है, मतलब जैसे ही रिजल्ट हुआ उन्होंने मुझे कॉल किया, हम लोग मतलब मिले, और इन्होंने 10th में किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, ठीक है। लास्ट का जो 15 डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट के 15 डेज में कैसे उन्होंने अपना हर एक चीज मैनेज किया था, ठीक है, वो आपके साथ वो शेयर करेंगे, ठीक है। दोनों को परसेंट, जो परसेंट है आईसीएसई में वो 99% आ चुके हैं, ठीक है। तो वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, जो आपको अभी लास्ट के 10 से 15 दिन में क्या करना है, कैसे टेम्परामेंट के साथ जाना है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं आई थिंक वेदांत को पूछता हूँ, वेदांत एंड देन पार्थ, तू यहाँ पे है ही, ठीक है। तो एक मिनट, वेदांत का मुझे लगता है कि आई जस्ट नीड टू पिन योर वीडियो सो दैट एवरीवन कैन, आई थिंक यस, आप तू बता सकता है। हाँ, so like last 15 days I think are left. Last 10-15 days. यस यस, अभी Most उनका एग्जाम है important. 18 फेब से, तो Okay. उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। एंड आई थिंक तुझे आईसीएसई बोर्ड में कितने परसेंटेज आए थे वेदांत? 99.6. यस, तो वेदांत को 99.6% आए हुए थे। और लास्ट के 10-15 डेज में तेरा प्रिपरेशन कैसे था, क्या था? एंड बाय द वे गाइस, वेदांत बायोलॉजी ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का विनर भी है, ठीक है। मतलब इंडिया से सिर्फ 4 लोग को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें वन ऑफ द वेदांत था। और अभी जेईई मेन के अटेम्प्ट में उसको 99.94% परसेंटाइल आया हुआ है, ठीक है। यस वेदांत, तो प्लीज। Yes, sir. So for last 10-15 days, I think by now, hopefully, you should have completed your syllabus, completed going through your syllabus. So right now, it's just the time of revision. And like, I think the first paper is generally English only. I'm not sure about the timetable for this year, but until like at least before 3-4 days before your English paper, you should still be doing all the other subjects. And what I did was that I tried to practice writing mock papers. Like you can practice giving papers of previous years if the pattern is the same, or maybe prelim papers of various other schools are also available online. So just practice writing papers in the given time and getting them corrected by the teachers to get an idea of what sort of mistakes you make. That was really helpful for me. Like, because in boards, the most important thing is knowing how to write your answers properly. Because sometimes even the tiny mistakes can make you lose marks. So yeah, like I remember, like I had written a lot of biology papers because I made a lot of mistakes in biology. Tiny, small mistakes, diagrams, labeling, whatnot. And I always messed that up. Like, again, I can give subject specific advice, like in biology, practice diagrams, practice location, function, all those things are asked. And
I remember in biology papers, all the papers I wrote, I think about 10 papers, I never got like I never got full in any of them. So in the end, like because of the practice that I did of the papers, I was able to get full in the final exam. So, and the other subjects also, I think, like generally it's the same. Chemistry, you should review the equations and reactions frequently again and again. Chapters like I think HCl, H2SO4, the study of compounds part, they are they have a lot of weightage and they are also quite easy. So yeah. So just I think an important thing is when you go for the exam, you have to stay calm and not get overwhelmed. The exam is at your own school only, so the environment is also familiar. So just stay calm when you write your paper. In the reading time, read carefully, decide what questions you have to attempt. When the writing time begins, just attempt the question, like write neatly and properly. Don't be in too much of a hurry. If you have solved papers before, then you will know how you have to manage your time and you'll do that accordingly. So I'm like, yeah, I think, sir, that's it from my end. कुछ और इंफॉर्मेशन मतलब किसी को चाहिए तो हम लोग वेदांत से इनपुट लेके आपको दे सकते हैं, मतलब पेरेंट्स को. अगेन मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हम लोग के टीम को कि सर वी आर नॉट एबल टू गेट इन, मतलब जूम के अंदर. बाय मिस्टेक एक्चुअली जूम मीटिंग हमने स्टार्ट किया था. वी ऑलवेज कीप दिस एज जूम वेबिनार सो दैट लाइक मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. ठीक है, बट आज काउंट आपके जितने भी दोस्त होंगे, ठीक है, आपने लेक्चर देखने के बाद उनको आप उसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर सकते हो. विल फॉरवर्ड यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग आप लोग फॉरवर्ड कर देना. ठीक है गाइस, बस वो इतना रिक्वेस्ट है क्योंकि गलती हमारे से हुई है आज. ठीक है, बाय मिस्टेक अगेन जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है. अगेन मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि हम लोग को पढ़ना है और मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज. ठीक है, यस यस पार्थ. पार्थ जो है लाइक पार्थ इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट स्टूडेंट. ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि मतलब हर कोई स्टूडेंट फेवरेट होता है, बट ये जो था, क्योंकि ये मैं फेवरेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वेदांत एंड पार्थ दोनों दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. मतलब आईसीएसई में भी 99% स्कोर करते हैं. एट द सेम टाइम जेई जैसे एग्जाम्स, ठीक है, वो भी आराम से क्रैक करते हैं. मतलब आप समझ रहे हो 99.94 परसेंटाइल एंड 99.5 परसेंटाइल, मतलब बहुत अच्छी चीज होती है इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन. ये जो हुआ है उसके बाद भी दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, तो इसीलिए मैंने उनको खास बोला है. उनका 12 का एग्जाम चल रहा है. ठीक है, 5 दिन के बाद वो 12 का पेपर भी देने वाले हैं. 12 का एचएससी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद भी वो आए हैं. तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम, पार्थ प्लीज कि 10th में क्या करना चाहिए वो भी उनको, लास्ट के अभी 5 दिन के बाद उनका एग्जाम है उन लोग का भी, and then the last 15 days क्या करना चाहिए, please guide them. Hi everybody. So like I know you've got less than a week left for your boards, and I can just recall how I was feeling at that point in time. And what I want to say to you that right now is the last lap. It's the last 50 yards. You're going to have to push as hard as you can. तो अब पढ़ाई का क्या करना है वो तो आपको पता ही है, but I'm just going to give you a simple run through once again. So I guess you've got 6 days left for your first paper, which I'm guessing is probably one of the 2 English papers, English language या literature. मेरे year में तो पहला paper language था. So what I did in the last week was absolutely destroy all the past 15 years previous papers of ICSE and take the prelim papers of other schools. Now, some of these prelim papers are going to be much higher level than what you should be expecting in your ICSE boards. And that just doesn't go for language, but also goes for every other subject. So as for your language, the first thing you're going to prioritize is your grammar section. Because what happens for most students is that your creative writing is going to be really strong because, you know, you're in that, even in that exam setting, you're going to be very capable of thinking up ideas for letters, essays, and your story writing part. But the grammar section cannot be a weak point because that is the only place where most students tend to lose marks. Again, you know what's best for you. This is just a general idea of what I've observed in my exams.
Secondly, as for your literature paper, nothing is more important than the text. I remember like when I was taking my ICSE paper, I guess the syllabus has changed now and you guys have Julius Caesar or something for your drama section. But I personally had Merchant of Venice, the part after Act 3, Scene 2. And till date, I know most of the lines verbatim. That's going to be very important if you want to score in your English literature section. As for your poems, obviously you have to know them by heart, word by word, and you need to know a line by line analysis. Again, your teachers must have taught you that. Just go over your notes and I think you'll be good. As for your prose section, I don't think that needs much, as you all know. So yeah, now coming to the sciences, the part that most of us were kind of a little, it goes haywire sometimes. So for the sciences, we all know the most important thing is the definitions. So up till 3 days before the paper, you want to do your definitions. And after that, you just want to breeze through all your past 15 to 20 years of board papers. Now, these papers are going to take about 3 hours each. Even if you do 2 papers a day, you'll be in great shape for your exams. Because again, the prelim papers that you have seen for your own school and for other schools are usually going to be of a much higher level, especially for schools like Jamnabai or Dhirubhai Ambani, than what you should be expecting in your boards. Now, once you're through with the definitions, for physics, you're going to go through the numericals, obviously. These numericals are usually pretty simple and formula based. But for chemistry, you cannot take the numericals lightly. This is one of the mistakes I made in my prelims, and I had just about a month and a half to fix some of these errors. And if you do manage to pinpoint and fix your errors, you should be expecting about a 7 to 8% jump from what you scored in your prelims to what you will score in your actual board exams. And obviously for chemistry, as Vedant pointed out, your chemical equations and formulas have to be airtight. Coming to biology. Now for my year, the 2 toughest papers were physics and biology. Physics was kind of an in-depth textbook question-based kind of thing. You're going to have to scour through every single corner of the textbook. But for biology, the paper was not really difficult, but the grading was quite hard. They're going to want you to learn every single organ in the plant and animal system, its name, its proper scientific name, that is the one you write in italics with the first capital letter and underline, as your bio teachers must have told you, the location and the function of the organ, which is given in the textbook word by word. That is probably the most important tip for scoring anything above a 95 in biology. Moving on to mathematics. These papers are going to be very simple. They're going to be textbook based questions and they pretty much keep recycling the maths paper every 4 years. So go through some of the previous year papers and you'll be in good shape. As for your second language, you're going to do the same thing as you did for your English language paper. You're going to go through the grammar. I'm pretty sure you should all be good at your creative writing. And for your literature section, your teachers must have taught you quite well. You should just go through the textbook, mark what you think is important or could show up. And again, go through every single corner of the textbook because honestly, ICSE can ask you questions from anywhere they please as long as it is inside the textbook. So, all right, best of luck and you're going to kill it. Trust me. You're going to do better than you think you are. Okay. Thanks for the motivation and thanks for the advice, Parth. Really well यार, मतलब ये जो बात करते हैं मैं तो उसको बोला यार प्रोफेसर कुछ कहीं पे भी जॉब कर लेकिन प्रोफेसर तो आराम से बन सकता है मतलब प्रोफेसर मतलब नॉर्मल प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड हार्वर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी थैंक यू रियली गुड यार थैंक यू सर ठीक है